So, Assalamu alaikum. Again, this is Kamran Sultan. Today is March 19th, 2023. और आज का हमारा जो सेशन है अगले 3 घंटे में you will get a good deep introduction to NLP and you will have some ideas about what NLP is. And my intention is that by the end of this program, you will, have more curiosity. You will know whether this is something you would want to pursue further, study further, or this is something just like not your ball game. Okay, so I want you to have that kind of understanding with this. और ये जो आज का हमारा session है, this is basically, you can say it's an introduction to NLP practitioner certification training. So with that in mind, let's begin. So first of all, since many of you are here for the first time, some of you have not seen me earlier. My name is Kamran Sultan. I'm a master trainer of neuro-linguistic programming. And what is neuro-linguistic programming? बहुत सारी मेरी YouTube channel पे अगर आप जाएं तो मेरी बहुत सी इस पे videos आपको मिलेंगी, and there's a lot of information. लेकिन briefly अगर हम NLP की definition में जाएं, इसके 3 लफ्ज हैं: न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. ओके, बहुत ही सिंपल. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ब्रेन थ्रू लैंग्वेज. ओके, सो हमारे ब्रेन पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारी न्यूरोलॉजी पे, हमारी कम्युनिकेशन का क्या इफेक्ट होता है, या किसी दूसरे की कम्युनिकेशन का हमारे ऊपर, या हमारी कम्युनिकेशन का किसी दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. So NLP basically, you can call it a science if you want. I don't think this is a science. Okay, you can call it a pseudoscience if you want, but it's an art, and it is the study of subjective experience that basically tells us the effect that our language, our communication has on us as well as on other people. The way that we communicate to ourselves, how it influences us, and the way that we communicate to ourselves or other people, how it influences them. And how by changing our communication, if we are communicating with people and we are not getting the kind of results we want from them, how we can change our way of communicating and get the kind of results we want. Okay, so इसके जो 3 parts हैं, न्यूरो से मुराद, as I said, this is related to our nervous system. हमारे जहनों में जितनी भी information है, this is over our 5 senses: sight, sound, touch, smell, taste. Okay, so इस NLP में जो इनके लिए words use होते हैं, sight के लिए visual, auditory for hearing, sound, kinesthetic for touch, olfactory for smell, and gustatory for taste. Sight, sound, touch, smell, taste, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे जहन को आ रही है, इन 5 सेंसेस के थ्रू आ रही है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे जहन में इंटरनली जो प्रोसेस हो रही है, we are forming, creating interpretations of events. Okay, so हमारी न्यूरोलॉजी में, so न्यूरो से जो मुराद है, it's our nervous system. लिंग्विस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें आती हैं. लिंग्विस्टिक्स में हमारी वर्बल as well as non-verbal communication. It's हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कैसे कह रहे हैं. और इसमें फिर मजीद अगर हम जाएं, so एक वो communication है जो मेरे अपने अंदर मेरे साथ हो रही है, जिसमें कहता हूँ मेरी सोच, I'm thinking. Okay, दूसरी वो communication जो मेरी किसी दूसरे के साथ हो रही है. Okay, so आपकी अपने साथ जो communication है, और what we call the intrapersonal communication, and आपकी कम्युनिकेशन किसी दूसरे के साथ, which you call interpersonal communication, इन दोनों चीजों का इफेक्ट आपकी न्यूरोलॉजी पे क्या आ रहा है. Okay, so हम जब लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें हम इंटर एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इन दोनों की बात कर रहे हैं. और इन दोनों में जो फर्दर जो 3 चीजें आती हैं, वो है the words that we use, the tone with which we words use, and the physiology with which we use those words. Okay, so the body language, आसान लफ्जों में जिससे आप कहें. Okay, so हम क्या कह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं, और हमारे यानी टोन क्या है, हमारा लहजा क्या है, और हमारा उस वक्त how we are using our physiology, how we are using our body. So एक ही word
एक अगर मुख्तलिफ टोन के साथ और एक मुख्तलिफ फिजियोलॉजी के साथ एक्सप्रेस किया जाए, उसके माने चेंज हो जाते हैं. So if, for example, if I say Assalamu alaikum, and if I say Assalamu alaikum, it's a different physiology, it will have a different meaning. If I say Assalamu alaikum, okay, now I have not changed the word, but the meaning that a listener will get will be different because I have changed the way I'm saying that word. So it's not what we are saying as much as how we are saying that matters. Okay, so linguistics is about communication, and programming basically मेरे और आपके जहन में जो बेशुमार thought patterns चल रहे हैं, बेशुमार हमारे जहन में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो रवैये हमारे अंदर जनरेट हो रहे होते हैं, it's the result of the thinking process that is happening. So those thinking process, those patterns is what we are calling programs here. So neuro-linguistic programming, ये जो term है neuro-linguistic programming, अक्सर लोग उसको confuse कर जाते हैं, but इसके जो founders हैं, there are two people mainly, Dr. Richard Bandler and John Render. These are the people back in 1970s. They studied some of the best therapists of their time, and some of the best communicators. They studied their ways of communicating. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा because इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे हमारे कम से कम 1 घंटा में खाली हिस्ट्री के पढ़ने चाहिए. So, but Richard Bandler, Dr. Richard Bandler and John Rinder, they studied some of the best therapists of their time. And they found that wo jo therapists hain, they have a particular way of communicating. Like wo therapists who are able to produce amazing results. उनमें 2 लोगों का जो नाम है सबसे टॉप पे आता है इसमें, जिनको सबसे पहले स्टडी किया, उनमें खातून थी जिनका नाम था वर्जीनिया सैटर, और एक साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर मिल्टन एच एरिक्सन. मिल्टन एरिक्सन जो था, he was a hypnotist and he was a medical doctor, he was a trained psychiatrist, he was the head of psychiatry department in Arizona State Hospital, and he was also a psychiatrist, a hypnotist. He was a person जिसने 60 साल 1920 until his death in 1980 practiced hypnosis for 60 years, treated over 30,000 people, and wrote over 100 research papers and books on hypnosis. इसका काम इतना broad है, इतना vast है कि there's a separate branch of hypnosis which is entirely based on his words, and it's called Ericksonian hypnosis, जिसे आप conversational hypnosis भी कहते हैं, indirect hypnosis भी कहते हैं. So Milton Erickson was the person behind it. So Richard Bandler, John Rinder, when they studied Virginia Satter and Milton Erickson, they found they have a very particular way of communicating. Virginia Satter, by the way, was a woman who was very, very precise in her communication. Okay, I'll give you a brief idea of their ways of communicating shortly, inshallah, आज के session में. But these were the 2 people who were initially studied. और उनकी स्टडी से, उनको स्टडी करके उनके जो पैटर्न्स थे कम्युनिकेशन के, ऑफ प्रिसिशन कम्युनिकेशन एंड हिप्नोटिक कम्युनिकेशन, रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन रिंडर क्रिएटेड सम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनको उन्होंने मिल्टन मॉडल और मेटा मॉडल का नाम दिया था. और उन्होंने जो सबसे पहले NLP का भी नाम इजाद होने से पहले 4 किताबें लिखी थी, जिनका 2 किताबें हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 and 2, and then 2 किताबें हैं Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume 1 and 2. These are 4 books. इसमें आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का लफ्ज नहीं मिलेगा, बट ये किताबें जो थी, this was the foundation work for NLP, like over 50 years ago now. So Richard Bandler, John Rinder, they created this model, and they called it neuro linguistic programming, and that's what we will be studying today briefly. I hope यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ रही है. If it makes sense, if this is clear, just type 1 so I'll know. Okay, I'll answer if you have any questions. I'll answer your questions inshallah towards the end of the session. So hold your questions. Now, NLP, I'm seeing number of ones here, and if you don't understand this, just type 2. Okay, so I'll know. So I'll explain this in more detail. So Richard Bandler, John Rinder, when they formulated NLP, they created certain principles, okay, or NLP, we call them convenient beliefs of NLP. We also call them, presuppositions of NLP. So चंद यानी कोई भी साइंस होती है, कोई भी
we are Muslims, and as Muslims, there's a certain belief system we follow. Okay, we believe in Allah, we believe in Rasulullah, we believe in Quran, we believe in Jannat, we believe in Jahannam, we believe in Akhirah. Those are our beliefs. Okay, so anyone who disagrees with the belief system Islam ka, we say, oh, this person is not a Muslim. So we believe on that the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was the last and final messenger. Okay, anyone who doesn't believe it, he can call himself whatever he wants, but he is not a Muslim. Okay, so for a Muslim to be a Muslim, there is a certain belief system that we have to follow. Okay, everyone has believes that namaz हमारे ऊपर 5 टाइम फर्ज है. अब वो नहीं पढ़ता, वो एक अलग चीज है, बट कोई अगर उसका इनकार करे कि जी नमाज नहीं फर्ज है, तो फिर भी say no, this person is not is out of the sect of Islam. So there's a certain belief system for any particular methodology, any particular religion, any particular doctrine we follow. There's this particular belief system. NLP में जो belief system है, इसके जो principles हैं, उनको presuppositions या convenient beliefs हम कहते हैं. There are a number of them. I'll not go into all of those. I'll just give you a brief overview of some of those. So सबसे पहला इसका जो presupposition है, और वो ये है that perception is not reality. We are all perceptual map makers. हमारे brain को, according to psychiatrists, psychologists, हमारे brain को at any given point in time तकरीबन 2 million bits information जा रही होती है. Just think about this. Right now, as you are listening to this or watching this, there's so much information in addition to my voice that's going in your brain right now. There are things in your surrounding. There's temperature in your surrounding. There's the feeling of your clothes on your body, the rise and fall of your chest. With every breath you are inhaling, and then with you're exhaling carbon dioxide. If you had your lunch or dinner or breakfast, whatever, there is this digestion process going on in you right now. The blood is rushing in your body, your nails are growing, your hair are growing, your beard is growing if you're a man. So there are so many processes. और इसकी जितनी भी information है, ये आपके brain में जा रही है, constantly जा रही है. This is in addition to वो जो 5 senses से सारी information आ रही है, there is so much going on inside us. Okay, so अगर हम ये सारी 2 million bits information को एक साथ process करने लगे, we'll go crazy. This is like अभी आप अपने मोबाइल पे अगर बहुत सारे आपने apps खोले हुए, आपका मोबाइल स्लो होने लगता है, मोबाइल हैंग करने लगता है, then you have to it's like close all of those, or अगर कंप्यूटर पे हो तो you have to restart the whole thing. इसी तरह हमारे ब्रेन में अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन, it's like एक मैं दिल धड़का रहा हूँ, उसके बाद मैं सांस भी ले रहा हूँ, एक मिनट जरा खून गर्दिश कर लूं, अरे इस वाले हाथ में खून गर्दिश करना रह गया था, ये पैर भी तो था. Okay, if we start doing this all consciously, we'll go crazy. So अल्लाह ताला की शान है कि उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे शऊर में हमारे नहीं है, मगर वो लाशऊरी तौर पे हमारे साथ हो रही हैं. Okay, so इससे हमारी शख्सियत के दो पहलू बन गए. And this is again to make things understandable, we are using these terms. So you have a conscious mind and you have an unconscious mind, and there are things you do in your consciousness that you are aware of, and things that you're aware of, we call them that's your conscious. Then things that you're doing which are not in your awareness, we call them your unconscious. Okay, so हमारी जो ये information आ रही है हमारे सेंसेस से, हमारे अनकॉन्शियस में 3 प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हो रहे होते हैं. हम आने वाली इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, some people are still trying to join this session, and when they join, and let's suppose if they ask any one of you कि अभी तक क्या हुआ है, every one of you will tell 100% truth from your perspective, yet it will not be the same as someone else, because हर एक आप में से जो कुछ अभी तक मैंने आपको बताया उसको अपने अपने अंदाज में डिस्टॉर्ट करेगा. सो हम आने वाली इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं. आने वाली इंफॉर्मेशन में से हम चीजों को डिलीट कर रहे होते हैं और उनमें से हम चीजों को जनरलाइज कर रहे होते हैं. सो 3 प्रोसेसेस
कॉन्स्टेंटली हमारे जहन में अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहे हैं, डिस्टॉर्शन, डिलीशन एंड जनरलाइजेशन. वी आर नॉट कॉन्शियसली डिसाइडिंग ओके मैं इस चीज को डिस्टॉर्ट करूंगा और इस चीज को डिलीट करूंगा, इस चीज को जनरलाइज करूंगा. These are the processes that are happening in our brain automatically. We are constantly distorting, deleting and generalizing information, जिसके रिजल्ट में हमारी perceptions form हो रही हैं, हमारी thought structures form हो रहे हैं. और जो thoughts हमारी form हो रही है, यानी हमारी mental screen पे हमारे thoughts बन रही हैं, हम उन thoughts को, it's like I often say this, the most difficult thing for a person is to disagree with their own thoughts. Because it's in us and we think what I'm thinking is the way it is. This is how the world appears to us. So हमारा जो behavior होता है, it is not based on, and this is the second presupposition of NLP, it is not based on हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, but it is based on what we think is happening. I'll repeat that. हमारे साथ क्या हो रहा है जिंदगी में, it doesn't matter. What really matters is what we think is happening. Okay, and this is the reason you find two people in exact same situation respond entirely differently. Because one person is distorting, deleting, generalizing in one way, and another person is distorting, deleting, generalizing in another way, and responding in a totally different way, forming a different set of perceptions, and with a different set of perception, responding and reacting in a totally different way. Does this make sense? Have you noticed this? Sometimes I saw like, there is something happening in your life and you are like, yeah, happy with this, and maybe a brother or a sister or a friend, they are looking at it totally differently and have a totally different perspective on that. और होता फिर क्या है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जैसा, it's like the most difficult thing for a person is to disagree with their own thoughts. And since and when people don't agree with my thinking, okay, the way that I think, my perceptual world, when people don't agree with this, it feels like people are not with me, they don't understand me. Okay, but how many of you can relate to what I'm saying? Type 1, so it will help me. So presuppositions जो हमारी बन रही हैं, सबसे पहली presupposition क्या हो गई, that we are all map makers, perception is not reality. However, हमारा जितना भी behavior होता है जिंदगी में, it is based on our perceptions. So इसमें एक चीज जो पता चलती है वो ये कि at any given point, what we really truly experience is not the event. The way life appears to us is, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ हालात हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे अंदर whatever feelings we are getting, irrespective of वो feelings positive है या negative है. Okay, so जी आजकल मुल्क के हालात ठीक नहीं है, दुनिया के हालात ठीक नहीं, इस वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है. लेकिन लोगों को बेहतरीन हालात में भी एंजाइटी होती है. अगर हालात ही एंजाइटी के जिम्मेदार होते तो फिर सबको होनी चाहिए थी. it's like मेरे साथ ऐसा हुआ था. अच्छा, फिर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास we have memories, we have thoughts. Memories क्या होती है? Those are our thoughts. Okay, so हमारे पास्ट में कोई चीज हुई थी, किसी ने मेरे बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ था, and now that event is over. It's done. I have grown up. I have grown out of that situation. That thing is the thing of the past. It has nothing to do whatsoever. Even people in that event don't exist in my life anymore. Now, if I am bothered by that, it is nothing but just a figment of my own imagination, a program running in my head, a thought pattern I'm running in my brain, and experiencing whatever, whether it's positive or negative, that's besides the point. NLP is process-based, content-free. इस पे थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा. So हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे जहनों में आ रही है,
डिस्टॉर्ट डिलीट जनरलाइज होकर हमारी परसेप्चुअल वर्ल्ड फॉर्म हो रही है, और वो जो परसेप्चुअल वर्ल्ड है वो हमारी बेसिकली हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं जिंदगी के बारे में, हालात के बारे में, वाकयात के बारे में, इवेंट्स के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के रवैयों के बारे में। और जो चीज हमें असल में बॉदर कर रही होती है, जो चीज हमें असल में परेशान कर रही होती है या हमें खुश कर रही होती है, वो चीज कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं होता, वो कोई बाहर से होने वाली चीज नहीं होती। वो खुशी जिसे हम बाहर तलाश कर रहे होते हैं वो हमारे अपने अंदर होती है असल में। इट्स जस्ट इट डजंट अपीयर दैट वे। द वे इट अपीयर्स इज, जब मुझे वो बोनस मिलेगा ना फिर मैं बड़ा खुश हूंगा, जब मैं अपना वो गोल अचीव कर लूंगा तब मैं खुश हूंगा। सो हम डिले करते हैं खुश होने को, हम डिले करते हैं शुक्र करने को, हम डिले करते हैं अच्छा फील करने को, इंतजार में किसी एक्सटर्नल इवेंट के, जबकि वो इवेंट हमारी उस खुशी का या उस गम का जिम्मेदार नहीं होता। सिमिलरली हम एंजाइटी फील करते हैं, हम फियर फील करते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं by thinking about unpleasant thoughts, by holding unpleasant thoughts in our own brains. हम जिस किस्म का गुमान अपने जहन में कायम करते हैं किसी चीज के बारे में, वो गुमान हमारे ऊपर गालिब होने लगे कि जी गालिब गुमान ये है। सो एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन जो है, मैंने दो डिस्कस किए अभी तक, नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड प्रीसपोजिशन एनएलपी की जो है वो ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है, इट्स द लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी डू इन आवर ओन हेड्स। यानी हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमारी जो बातचीत होती है, इससे हमारे जहन में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं इसकी इंडिकेशन होती है। ओके, सो मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें एक शख्स कहता है कि जी मुल्क के हालात जो हैं वो बड़े तकलीफ दे हैं। ओके, सो तकलीफ दे जो लफ्ज है, दिस इज किनेस्थेटिक वर्ड, so this means the person is processing the situation at the level of his or her feelings. Another person says like मुझे, मैं देख रहा हूँ मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं, okay? मुल्क के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे, so they're like looking up and like talking about ठीक नजर नहीं आ रहे, so this person is visualizing the situation in his head. Another person say मुझे, मैं तो कहता हूँ जी अब हालात ठीक नहीं है, okay? आप किसी से भी बात करें आपको अंदाजा होगा हालात जो है वो, so the person is processing at the level of words, auditory, okay? मैं कहता हूं, किसी से भी बात करें, okay? So even though these three people may be talking about exactly the same thing, but they are processing information at in three different ways, using three different brain languages. Okay, इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं. So language is a literal representation of what people do in their heads. So by paying attention to people's language, we can find out what they're doing in their brains. And by paying attention to our language, we can find out what we are doing in our brains. And by changing the language that we are using, we can change the programs we are running. Okay? Because neuro-linguistic programming, a lot of times हमारे साथ ऐसा होता है कि आपने सुना होगा बहुत बार लोग कहते हैं इट्स लाइक ये फलानी चीज होने, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा होगा. Okay, how many of you have heard this kind of things from people or even have said this? Okay, like मुझे पहले ही पता था ये चीज खराब हो जाएगी and then फिर वो खराब हो जाती है. How many of you have heard this or said this? Just one? सिर्फ मधिया ने किया है? Everyone else, no one else this experience? So I see a number of people saying this many times. Now think about this. When people say this, कि मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा, अगर आपको पहले ही पता था तो आपने उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं?
Because there's this human desire to prove themselves right, even if it hurts them. Okay, so a lot of times when people are saying these kind of things, मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा. Okay. In their heads, they they are seeing something bad happening, and they're not doing anything about it. They have convinced themselves. Okay, it's like the first करो कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपको पता है कि आगे जाके गड्ढा है और उस गड्ढे में अगर आप जाते रहे तो आपकी गाड़ी उस गड्ढे में फंस जाएगी. Don't you think it is wiser to stop and take a turn or find a different way rather than just keep going in that direction? But a lot of times people live their lives कि उन्हें पता था मुझे कि मैं आगे जाके मैं ये बिजनेस डील कर रहा हूं ना, ये रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश है, मुझे पहले ही पता था इसमें कोई ना कोई मसला है. जब आपको पता था मसला है तो फिर आपने ये बिजनेस क्यों किया? अगर आपको पहले ही पता था ये मसला है तो फिर आपने ये रिलेशनशिप क्यों एस्टैब्लिश किया? Why didn't you stop? पहले ही पता था ये होने वाला है. So there was this, ये पता कैसे था? There was this gut feeling, but the person did not trust his or her own feelings. Okay, so हमारा जो unconscious mind है, it's guiding us, it's telling us, it's informing us, but we try to ignore it. Okay, so there is this wisdom in every one of us. अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो भेजा, सो हम में से हर एक के अंदर, मैं ये बात बहुत सिंपल मुझे बहुत लगती है समझने में कि यानी सोचिए हम जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम उनको स्कूल भेजने के लिए हम सारी तैयारी कराते हैं. हम उसे बैग देते हैं, किताबें देते हैं, कॉपियां देते हैं, पेन देते हैं, पेंसिल देते हैं, स्केल देते हैं, शार्पनर देते हैं, हम उसको सही जूते देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, हम उसको लंच बॉक्स देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, हम वी मेक श्योर उसके पास कुछ पैसे भी हो. चंद घंटे के लिए हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है. We want to make sure that he has everything he or she needs. चंद घंटे के लिए. So वो जो हमसे हमारी माओ से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, उसने जब हमें इस दुनिया में भेजा तो ऐसे ही भेज दिया होगा. हम बड़े मोहब्बत करने वाले हैं अपनी औलाद से, हम उसको सब कुछ देते हैं और वो जो हमसे हमारी माओ से बेइंतहा ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, उसने हमें 60, 70, 80 साल के लिए दुनिया में ऐसे ही भेज दिया. I mean, can you even imagine this? The fact is that every resource you need, and that's another presupposition, okay, कि हर वो रिसोर्स जो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में कोई बेहतरी तब्दीली लाने के लिए चाहिए, वो आपके और मेरे अंदर मौजूद है. लेकिन हमने क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, फर्स्ट करो कि बच्चे के किताब बैग में हमारे लंच बॉक्स रखा था, बट बच्चा जो है वो भागने दौड़ने में उसका लंच बॉक्स जो किताबों के नीचे हो गया. अब जब वो ब्रेक का टाइम आया उसने देखा तो उसने कहा अम्मा ने आज लंच दिया ही नहीं है और भूखा रह गया. लंच बॉक्स बैग में था, बच्चे ने उसको तलाश नहीं किया. बिल्कुल उसी तरह हर वो रिसोर्स जो आपको अपनी जिंदगी में बेहतरी के लिए चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, अपनी जिंदगी में कोई बेहतर तब्दीली लाने के लिए चाहिए, वो आपके अंदर मौजूद है. That's another presupposition of it. So there is no such thing as an unresourceful person. It's that sometimes we operate from an unresourceful state of mind and body. Okay, आप में मेरे अंदर resources की कोई कमी नहीं है. It's just कि कभी-कभी हम unresourceful states के अंदर operate कर रहे होते हैं. Okay, so these are some of the presuppositions. There are many. अगर मैं खाली presuppositions पे जाऊं, again ये सारे topics इतने बड़े-बड़े topics हैं कि मेरा ये पूरा 3 घंटे का सेशन सिर्फ इन presuppositions पे निकल जाए. कि मेरा जो होम स्टडी कोर्स है उसके अंदर खाली presuppositions वाला जो सेक्शन है वो मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे का होगा. So there are many. Inshallah ta'ala, at the end of this program, you will Ramzan will give you
some details and how you can access a bonus program जिसमें you will find ये जो presuppositions जो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ सारी की सारी presuppositions आपको मिल जाएंगी. We have a bonus program for you which is called the beliefs of success in NLP. So you'll find that you will learn these things in detail. इसलिए इस यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, but this is just to give you an idea. I hope this makes some sense to you. Now Aisha has a comment here, and the comment is sometimes due to social pressure, sometimes you don't have a choice. Now here's another thing. Alam has said that sometimes you don't have a choice. NLP की presuppositions में एक जो last presupposition आप पढ़ेंगे is this: NLP is all about adding more choices. It's all about adding more choices. Okay, and when it says sometimes due to social pressure, jo Aisha, think about this. There is no social pressure. It's your interpretation of events and people's behaviors that you take pressure from. It appears to us that there is something outside of us causing what we are feeling. It's always our own thinking. Okay, so NLP में जो सबसे पहली चीज in set of skills हम सीखते हैं. I'll just stop recording here just to make sure the file size वरना फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, इनको manage करना मुश्किल हो जाता है. Okay, just I'll stop here.